So good evening everybody and welcome to our regular Thinking Thursday. And today we have a wonderful session on Bhagavad Gita. We're going to be focusing on chapter 2, and Shakuntala and me are going to be talking about certain verses that are of prime importance. So I'm just going to mute everybody so that it becomes easier. And Shakuntala ji is our co-host. So Shakuntala ji, आप already co-host है, तो आप शेयर करिए स्लाइड को, अनम्यूट करिए and you can start. All right. Thank you, ma'am. So just starting जहाँ से हमने लास्ट टाइम ओवर किया था, चैप्टर 2 की ही 62, 63 दो वर्सेस हमने ली थी। एक ही उसका ये हमने लेडर बनाया था। इसमें हमने ये देखा सबसे पहले कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिसेंट ऑफ नोबल मैन डाउन द लैडर ऑफ टेम्पटेशन इनटू रूम, कैसे हम धीरे धीरे गिर जाते हैं। ये स्टार्ट होता है बहुत सिमिलर उससे, विजुअलाइजिंग सेंसरी हैप्पीनेस। हमारे जो भी इंद्रिय सुख है उनकी बारे में जैसे भी हम सोचते हैं वहां से ये स्टार्ट होता है। एंड देन अब किसी भी चीज के बारे में, लेट अस टेक एग्जांपल, कोई लेट अस से किसी को कोई कार बहुत पसंद है तो वो उसके बारे में पहले बाहर देखता है, उसके बारे में उसको इंटरेस्ट आने लगता है, फिर धीरे धीरे उसको उसके बारे में अटैचमेंट शुरू हो जाता है। अटैचमेंट टू द फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन, उस पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे एक्टिव डिजायर फॉर रिक्वायरमेंट, उसको बड़े मन में इच्छा आने लगती है कि नहीं ये तो मुझे मिल ही जाए, ये मुझे मिल ही जाए, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे और ज्यादा उनकी क्रेविंग्स बढ़ने लगती है। ये जो डिजायर्स जो सिर्फ एक विजुअलाइजिंग सेंसरी हैप्पीनेस से स्टार्ट हुई थी, ये और ज्यादा बढ़ने लगती है, क्राफ्टी क्रेविंग्स होने लगती है। और उसके बाद में क्या होता है, आपका पीस ऑफ माइंड चला जाता है। अब आपको शांति नहीं है, हर समय आपको वही चीज दिमाग में घूम रही है जिसके प्रति आपको इतनी अटैचमेंट हो रहा है, लगाव हो रहा है। अगर या दो बातें हो सकती है, या तो आपको वो चीज मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती, अनफुलफिल्ड रह जाती है आपकी डिजायर्स, तो अब आपको एंगर आपका जनरेट हो जाता है, गुस्सा आना शुरू होता है जब भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है। और जैसे जैसे आपका एंगर बढ़ता है, आप एक डिल्यूजन की स्टेट में पहुंच जाते हो, एक भ्रम आपके दिमाग में पैदा हो जाता है। और अब अंदर की जो आपकी आत्मा आपको कुछ जो गाइड करती है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करे, अंदर से जो आवाज आ रही है, आप उसको दबाने लग जाते हो। एंड देन दैट इज द स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस, और आप किसी की भी सुन नहीं रहे। एंड उससे क्या नुकसान होता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। किस चीज का मेमोरी लॉस होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है। किस चीज का, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ट्रू इनर रियल नेचर क्या है, जो कि बेसिकली आत्मा है। वो एक चेतन तत्व है, मतलब कॉन्शियसनेस है। और ये जो चीजें, जो भी सेंसरी हैप्पीनेस या जो कुछ भी हमको चाहिए, ये सब चेतन नहीं है, ये जड़ है। ये एक्चुअली रियल नहीं, रियल नेचर हमारा चेतन। एनीवे, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया, कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन आगे और आगे बढ़ के क्या हो जाता है, हमारी रीजनिंग उससे खराब हो जाती है, डिकेड हो जाता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, हमारे विवेक का नाश हो जाता है। विवेक का नाश हो जाता है मतलब हमको भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तक एक छोटी सी डिजायर्स हमें यहाँ तक ले जाती है, और फर्दर जैसे ही किसी के विवेक का नाश हो जाता है, मतलब वो उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ हो ही जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे हम देखते हैं कैसे एक लैडर के थ्रू हम स्टार्ट होता है एक छोटी सी डिजायर से। वो अगर फुलफिल हो जाती है तो ठीक है, फुलफिल नहीं हो जाती है तो, और फुलफिल हो भी जाती है तो फिर हो सकता है फर्दर डिजायर्स हो, ना हो जाती है तो हमको किस तरीके से गिरा सकती है। ये तो हमने पिछले हमारे उस प्रोग्राम में देखा था।
आज हम थोड़ा आगे चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक जो मैं लेना चाहती हूँ इसमें से, वो टॉपिक है मेरा इक्वानिमिटी। ये पर्टिकुलर टॉपिक समता का भाव जिसको कहते हैं हिंदी में, ये टॉपिक मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इसी से रिलेटेड कुछ श्लोक मैंने लिए हैं। चैप्टर 2 का ही 38 जो वर्स है, ये क्या कहता है? भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जय पराजय, मतलब कि आपकी विक्ट्री हो रही है, डिफीट हो रहा है, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, गेन, क्या फायदा होगा किसको मारने से, इसके बारे में मत सोचो। सुख दुख, अच्छा बुरा, प्लेजर पेन, ये सबको समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, और इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अगर हम इस सब चीजों को, विक्ट्री है या डिफीट है, इसको अलाइक इक्वानिमिटी माइंड, इक्वानिमस माइंड से अगर हम सोच के करेंगे, तो इस तरीके से तू लड़ेगा भी। बेसिकली लड़ना क्या है? किल करना है, और किसको? वो भी अपने रिलेटिव्स को। तो डेफिनेटली किसी का मर्डर करना, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं, इट्स नॉट अ गुड, बट किलिंग समवन इन अ वॉर्स प्लेस इज, दैट्स ओके, वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इस तरीके से जब तू फाइट करेगा तो तुझे पाप नहीं मिलेंगे, तेरे को कोई सिन तेरा इसमें नहीं होगा, ऐसा समझाने की कोशिश कर। अब हम इसे अपने तरीके से समझते हैं। आज के टाइम में चलो हम एक कॉमन मैन है, हम वर्ल्डली पीपल हैं, सांसारिक लोग हैं। हमारे लिए जय पराजय इतना नहीं होता है डेली, लेकिन ज्यादा हमारा इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट लॉस में, लाभ हानि में, सुख दुख में। जरा हम इसको देखते हैं ध्यान से नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जब भी हम खुश होते हैं, चार लोगों को बताएंगे, कुछ भी हमने अचीव कर लिया, चार लोगों को फोन करके बताएंगे, पार्टी करेंगे, लोगों के साथ एंजॉय करेंगे, ये हमारा शुरू हो जाता है। और जब भी हम दुखी होते हैं, हम जनरली अकेले होते हैं, हमारी लगभग ये स्टेट होती है, और दुख में हम ऐसे डूबते चले जाते हैं। लेकिन ये जो भगवत गीता की 38 वर्ड्स, ये क्या कह रही है? कि बिल्कुल इक्वानिमिटी ऑफ माइंड बनाए रखो, इवन माइंडेडनेस बनाए रखो, दोनों स्टेज में, चाहे जॉय हो या सॉरो हो, इसमें आपका पीस ऑफ माइंड, आपका मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे, दिस इज व्हाट इज देयर, कि लाभ हानि सुख दुख, उसमें आप एक जैसे रहो, ये कॉमन मैन के लिए बता। लेकिन इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये पर्टिकुलर जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिया है, वो परमहंस योगानंदा जी की गीता का जो उन्होंने कमेंट्री दी है, वहां से लिया है। वो बहुत क्लियरली लिखते हैं कि एक वर्ल्डली मैन के लिए क्या मायने रखता है ये पर्टिकुलर श्लोक। एनीवन हु सीक्स मटेरियल फुलफिलमेंट, कोई बिजनेसमैन है सपोज, should keep his mind calm during success और failure। दोनों केस में, चाहे उसको बिजनेस में सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है, दोनों केस में उसको काम रहना चाहिए, इवन माइंडेडनेस रहना चाहिए। उसे क्या हो? he can focus more on greater success। अब हम इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। सपोज अगर उसको सक्सेस मिली है हल्की सी, और वो बिल्कुल ही ओवरजॉयड हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है, उछल रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इफ ओवरजॉयड विथ टेम्पररी प्रॉफिट्स, अभी उसको ग्रेटर सक्सेस मिली नहीं, हमें आधे रास्ते में ही हम नाचने गाने लग गए, तो ये जो है टेम्पररी प्रॉफिट्स हुआ है, इसमें क्या हो सकता है? ही में स्पेंड हिज मनी अनवाइजली एंड मे नॉट हैव परमानेंट प्रॉस्पेरिटी। मतलब उसको जिस हाइट तक पहुंचना था वहां तक पहुंचा ही नहीं, पहले ही वो फेल भी, आधी रास्ते में फिर वो नीचे भी गिर सकता है। सिमिलरली ये कह रहे हैं फेल्योर के केस में भी, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो भी, और बिजनेस में सक्सेस ये पिछले 2 साल में पैंडेमिक में हम सबने देखा है, तो ऐसे में भी भगवान कह रहे हैं कि इफ डिप्रेस्ड बाय बिजनेस लॉसेस, उस केस में भी अगर वो
इवन माइंडेडनेस रहेगा तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा? He may not be able to focus properly to renew his efforts. नए सिरे से उठ के काम करने की उसमें हिम्मत नहीं रही। वो हिम्मत लाने के लिए अगर इवन माइंडेडनेस रहेगा तो जरूर से जो लॉस हुआ है उस साइड में रख के आगे फिर से रिफ्रेश होके वो डिस्कस सकता है। ये हमारे जैसे सांसारिक वर्ल्डली मैन के लिए है। तो एवरी वर्ल्डली मैन सीकिंग सक्सेस, ये फाइनेंशियल तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इन द फाइनेंशियल एरिना और इन एनी अदर काइंड ऑफ कंपटीशन जो डेली हम फेस करते हैं, वी नीड टू कीप or a person should keep his mind calm to meet the constantly changing circumstances of his life. हमारी लाइफ की ये जो चेंज होती हुई सर्कमस्टांसेस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, इसमें वो स्टडी बना रहे, तो इसमें काम उसको मेंटेनेंस करनी है, पीस ऑफ माइंड बनाए रखनी। कैसे? उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, लाइक अ ट्रैक्टर, और ये एग्जांपल मुझे बड़ा अच्छा। आप इस स्ट्रक्चर की पिक्चर को देख सकते हैं, जिन्होंने भी खेत में फील्ड्स में ट्रैक्टर को काम करते हुए देखा है, ये बहुत ही अनइवन सी जमीन पे चलता है, फिर इसी के थ्रू बीज भी बोता है, फिर उसको प्लेन भी करता है। तो इसमें जो ये ट्रैक्टर इतना हैवी होता है, ऐसे ही हमको हमारे माइंड को इतना स्टेबल बनाना है कि ये जो अनइवननेस, जो अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ के हैं, इसमें भी हम स्मूथली चल सके। तो दिस इज फॉर कॉमन मैन, वर्ल्डली पीपल के लिए। देन अब क्योंकि हमारा ये जो ग्रुप है इसमें काफी स्पिरिचुअलिटी वाले लोग भी हैं, तो थोड़ा सा ये इसी श्लोक के बारे में और स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए हम वाले लोग इसको कैसे ले सकते हैं उसे समझना होगा। क्या होता है कि थोड़े सालों का डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर ली, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस लाइन में जा रहे हैं, तो ऐसे में मैनी डिवोटीज बिकम सेल्फ सेटिस्फाइड विद द सुपर कॉन्शियस जॉय ऑफ द सोल एंड विद beholding a few astral lights। उनको थोड़े बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कुछ सालों की मेहनत के बाद में, तो उनको लगता है अरे वाह, हमें तो बहुत कुछ अचीव हो गया। ऐसे में इसीलिए वो मना कर रहे हैं कि थोड़े से उसमें आप खुश मत हो, जॉय और सौरों में इक्वानिमिटी बनी रहनी चाहिए। अगर थोड़े से में अगर वो खुश हो गए तो क्या होगा, उनकी फर्दर प्रैक्टिस में कमी आ जाएगी। दे में मेक नो फर्दर डीप एफर्ट्स एट मेडिटेशन, वो ध्यान में और गहरा उतरना बंद कर देंगे, जबकि अभी उनको कितना रियलाइजेशन हुआ है, हल्का सा रियलाइजेशन हुआ है, और ऐसे में वो फेल हो सकते। दैट मीन्स इसका भी एक प्रोसेस होता है, जैसे कि पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो। ये सब मैंने पढ़ा है, मुझे भी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है। सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे आप अपनी आत्मा से आपका जो रियलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आता है, जिनको ये सब में जब एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर डीप मेडिटेशन करते हो, समाधि की स्टेज तक जाते हो, तब जाके आपको गॉड रियलाइजेशन होता है। तो एक प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने बताया। तो दोनों के लिए ही इक्वानिमिटी ऑफ माइंड जरूरी है, नहीं तो क्या होगा। इस पूरे श्लोक में मुझे एक चीज कहानी याद आती है, और वो है रैबिट एंड टॉर्टोइस की। मतलब कि अगर हम आधे में ही खुश हो लिए, ठीक है, तो फिर रैबिट की तरह हम कहीं पे भी रह जाएंगे। और अगर आप इतना सौरों में चले गए हो, तो फिर आप में फिर से उठ के हिम्मत नहीं होगी काम करने की। तो दोनों में आप इक्वानिमिटी बनाए रखो, भगवान ने कहा है, और इसमें आप आगे बढ़ते। श्लोक 38। अब इसी में हम आगे चलते हैं क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत ही फर्दर 50th श्लोक में, इसी चैप्टर के 50th श्लोक में भगवान फिर से लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन्स द रिजल्ट ऑफ इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। इसी को आगे और देंगे। इनफैक्ट अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर
भगवान इक्वानिमिटी ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं इन एवरी चैप्टर। कई बार आपको लगता है ये बात रिपीट हो रही है। मैंने जब शुरू में सुना, मुझे लगता है ये भगवान क्या एक एक बात रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जब बहुत डेप्थ में जाएंगे तो हमें पता चलता है कि 38 श्लोक में वो एक कॉमन मैन को किस तरीके से इक्वानिमिटी ऑफ माइंड बनाने हैं वो बता रहे थे। अब 50th श्लोक में थोड़ा डेप्थ में जाने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं वो? Endowed with equanimity, one frees the self in this life from good and evil, virtue and vice. यानी कि पाप और पुण्य समबुद्धि युक्त, इक्वानिमस माइंड को समबुद्धि युक्त भी बोलते हैं हिंदी में। पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस श्लोक में त्याग देता है। अभी ये शुरू में ये बात समझ में नहीं आती। चलो पाप को त्यागने की बात करते, पाप को तो सबको छोड़ना ही, लेकिन पुण्य को क्यों त्याग करें? पुण्य तो हम इतनी मुश्किल से तो पुण्य कलेक्ट कर रहे हैं, बड़ा अटैचमेंट होता है हमारे को पुण्य से, ठीक है। लेकिन ये इक्वानिमिटी ऑफ माइंड की थोड़ी आगे की बात है। कारण क्या है कि जब आप पाप पुण्य को इसी जीवन में त्याग देते हैं ना, तो आप मुक्त होते हो, तब आपको मुक्ति मिलेगी। एक्चुअली लास्ट हमारी जब भी क्लास हुई थी तो मैम ने भी इसको बताया था कि भगवत गीता जो है वो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाने का उपाय है। तो मोक्ष प्राप्ति कब होगी? जब हमारे पाप और पुण्य पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जब नील हो जाएंगे, तब मिलेगी। तो इसलिए आपको तो हमको खैर हम जानते हैं हमको नहीं उसको कलेक्ट करना है, लेकिन पुण्य को भी हमको एक्यूमुलेट करके रखना नहीं है, उसको भी एग्जॉस्ट कर देना है। तब हम इस जन्म और मरण के बंधन से छूटेंगे। ये इस श्लोक का वन पार्ट हुआ। देन देयर इज अ सेकंड पार्ट, उसको हम थोड़ा बाद में लेंगे। एंड दैट सेकंड पार्ट इज, इससे तू समर्थ रूप योग में लग जा, और ये समर्थ रूप योग ही कर्मों में कुचलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय। ये सेकंड क्वेश्चन हम एक नेक्स्ट स्लाइड में लूंगी। पहले जरा हम पाप और पुण्य को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। सैंपल लिया है कि कोई एक बंदा है जिसके 12 बर्थ्स, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो उसने फर्स्ट बर्थ में पुण्य करे 25 और पाप उसके हुए 5। नेक्स्ट बर्थ हुआ तो उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया, पुण्य करे उसने 5 और पाप हुए 40। यहाँ पे इसी को हमने ग्राफ से बताया है, पुण्य को हम ब्लू से दिखा रहे हैं और पाप को मैंने रेड से दिखा, इस तरीके से। यहाँ पे मुझे बताने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि इन दोनों के डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। पुण्य का अलग सम होता है और पाप का अलग सम होता है। जैसे क्रेडिट डेबिट होते हैं ना, वैसा नहीं होता कि पुण्य में से इतना पाप माइनस कर दो तो 20 बैलेंस रह गया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो दोनों का सेपरेट अकाउंट है, दोनों को सेपरेटली हमको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। और सपोज किसी के पाप एग्जॉस्ट हो भी गए हैं तो भी अगर पुण्य भी बचे रह गए तो उनको भी एग्जॉस्ट करने के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि पुण्य और पाप जिसकी समबुद्धि है, जिसका इक्वानिमिटी का माइंड है, वो पाप और पुण्य को दोनों को इस लोक में छोड़ देता और फिर वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ये वन पार्ट। अब हम एक और चीज देखते हैं इसी को, कि हम जानते हैं कि संसार में हर समय पुण्य पाप हो रहे हैं। यस नो हो रहे हैं। ओके, अब इस पूरे संसार का जो भी मालिक है वो तो एक ही परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा, ओमनी प्रेजेंट गॉड, हर जगह अवेलेबल है, वो उन्हीं का ही है सब कुछ। तो फिर भी ये पुण्य पाप उनको नहीं लगते। वो इनसे, ये जितने भी धरती पे इस समय पुण्य और पाप हो रहे हैं, जितने भी वर्चुअस सिन हो रहे हैं, ये
भगवान को टच नहीं करते, भगवान, गॉड रिमेन्स अनटच्ड बाय दैट। ओके, क्यों? और ठीक इसी तरीके से जो बंदा, जो भी पर्सन समता में निरंतर स्थित है, उसको पुण्य पाप नहीं लगता, उसका अक्यूमुलेशन नहीं होगा। So similarly, one who is constantly situated in equanimity becomes free from virtues and sins, जैसे कि भगवान है। और इसका एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि लोटस लीफ, कमल का जो पत्ता होता है ना, एक्चुअली हम नेट पे जो पिक्चर्स देखते हैं वो ये वाली दिखते हैं, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लोटस दिखाया होता है, बट रियल में ये पिक्चर कुछ ऐसी होती है, ये काफी गंदा पानी होता है। और जो लोग आप में से ऋषिकेश गए हैं, ऋषिकेश के योगी निकेतन आश्रम में गए हैं, वहां पे एक पॉन्ड भी है, उसमें भी वैसे गंदा मडी वाटर है, और उसमें इस तरीके के कमल खिले हुए हमने देखे भी। एंड इफ यू सी, इसकी डंडी भी काफी लंबी होती है, और ये वाकई में ये यही बताना चाहते हैं, इक्वानिमस माइंड का बेस्ट एग्जाम्पल है ये लोटस फ्लावर। इसमें क्या है, जस्ट एज अ लोटस लीफ अराइजेस फ्रॉम द वाटर एंड रिमेन्स इन द वाटर, वहीं पे ही है, बट इट डज नॉट गेट अटैच्ड टू द वाटर। ऐसा नहीं कि आप संसार से अलग हो जाओगे, आपको संसार में ही रहना है, लेकिन फिर भी संसार के पुण्य पाप आपको टच नहीं करेंगे। सिमिलरली, अ मैन विद इक्वानिमिटी remains detached from the world even though he lives in the world. तो ये इस श्लोक में मैं ये बोलना चाहूंगी, अभी इसका सेकंड भी है, लेकिन अगर हम देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बोल रहे कोई चीज रिपीट कर रहे हैं। 38 श्लोक में जहां वो ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, तो यहाँ 50th श्लोक में मैं बात करूंगी कि यहाँ ये पाप पुण्य से भी अटैच होने के लिए मना कर रही है, वहां सिर्फ सुख दुख की बात थी। तो यहाँ मैं बोलूंगी कि अगर वो ट्रैक्टर था तो यहाँ पे वो रोड रोलर का एग्जाम्पल दे, उसके सामने वो तो बिल्कुल भी नहीं हिलता, और उसके नीचे जो भी आएगा वो बिल्कुल प्लेन क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट, इसी श्लोक का जो एक लास्ट 3 वर्ड्स हैं उसको मैं लेना चाहती हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट, यहाँ पे भगवान क्या समझाना चाहते हैं कि तू इस डिवोट योरसेल्फ to this yoga of equanimity, skill in action lies in the practice of this yoga. ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। योग कर्मसु कौशलम, इसको बोलते हैं स्किल को, या और कर्मसु जो एक्शन आप कर रहे हो, काम जो कर, द स्किल इन एक्शन। ओके, कौशल को आप और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, आप कौशल को समझ सकते हो एक्सपर्टाइज होना, परफेक्ट होना। आप अपने कामों को कैसे परफेक्ट बनाओगे, उसका एक ही योग है, एंड दैट इज इक्वानिमिटी इन सक्सेस एंड फेल्योर इज द स्किल इन एक्शन। आपका एक्शन में परफेक्शन तब होगा, ऐसे नहीं 100 में से 100 मार्क्स लाने से होगा, बल्कि इक्वानिमिटी प्रैक्टिस करने से होगा। और अब हम ये जो एग्जांपल लेते हैं, इसमें आप देखो, जब भी हमको सक्सेस, ये कह रहे हैं भगवान खुद कि इक्वानिमिटी इन सक्सेस एंड फेल्योर, आपको सक्सेस मिले या फेल्योर मिले, आपका माइंड में इक्वानिमिटी बन रही रहनी चाहिए। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप एक्सपर्ट हो, कोई भी कर्म करने में, आपके एक्शन में आप स्किल्ड हो, आप परफेक्ट हो। ओके, सक्सेस तो ठीक है, लेकिन फेल्योर की तरफ जब हम देखते हैं ना, तो हम सक्सेस होती है तो 4 लोगों को फोन करा, बताया, लेकिन फेल्योर जब होती है ना, हमारी ये हालत होती है, एग्जैक्टली ये बिल्कुल अकेले पड़ जाते। और इसीलिए मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है। फेल्योर हम सबको फेस करना पड़ता है, सप्ताह में 2 बार, महीने में 2-4 बार फेल्योर हमको फेस करना ही पड़ता है। एंड वी आर नॉट ट्रेन्ड, बचपन से हम इस कंडीशन में हमको बड़ा किया गया है कि हमको सिर्फ सक्सेस का ही बताया गया, फेल्योर को कैसे हैंडल करें वो नहीं बताया गया। उसके लिए ये श्लोक काम का है कि इक्वानिमिटी इन सक्सेस एंड फेल्योर इज द स्किल इन एक्शन। तो मुझे ये क्यों
इतना अट्रैक्ट करता है, इसके पीछे रीजन यही है कि जब भी फेल्योर हो, ये हो, तब मुझे ये गीता के श्लोक सुनती हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा, भगवान खुद कह रहे हैं कि इक्वानिमिटी होनी चाहिए, सक्सेस एंड फेल्योर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन आई फील ओके ओके, भगवान खुद कह रहे हैं, चलो ठीक है, मान दिया, एंड देन लीव इट, और फिर हम डिप्रेसिंग मूड से बाहर आ जाते। तो these was the two श्लोकास जो हमको बता रहे हैं समता का, इक्वानिमिटी का। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसको प्राप्त कैसे किया जाए। समता की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? बुद्धि की स्थिरता, यानी कि टू अटेन दिस इक्वानिमिटी वी नीड स्टेबिलिटी ऑफ द विजडम। अब ये कैसे होगा? तो भगवान ने गीता में आगे के श्लोकों में खुद ही बताया कि किस तरीके से आप इक्वानिमिटी को अटेन कर सकते हो। उसके लिए उन्होंने एक संस्कृत का वर्ड यूज किया है, स्थित प्रज्ञ। इसको हमें समझना है। स्थित प्रज्ञा को हिंदी में इसका मीनिंग होगा स्थिर बुद्धि, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं जिसको स्टेबल इन विजडम। यहाँ पे बुद्धि का मतलब इंटेलेक्ट से नहीं है बल्कि विजडम से है, जहाँ पे हमारा विवेक भी काम करेगा, डिस्क्रिमिनेशन, भले बुरे का ज्ञान वाली जो बुद्धि होती है वो। तो उसमें अगर स्टेबिलिटी रहेगी, दैट इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञा। अब इसके मैंने 4 श्लोक लिए हैं, लेकिन भगवान ने इन चारों श्लोकों में अलग अलग लोगों के लिए बताया है, कुछ भी रिपीटिशन नहीं है। अब फर्स्ट है कॉमन मैन के लिए। वो पार्थ अर्जुना, वो 55 श्लोक में बता रहे हैं, when a man discards all his desires visiting the mind, उसके माइंड में जितनी भी डिजायर्स आ रही हैं उनको डिस्कार्ड कर देता है। जैसा भी हमने 62 63 में देखा कि गुस्से की शुरुआत होती कहाँ से है? उसकी माइंड में जो डिजायर्स हैं उनसे होती है। अगर उनको डिस्कार्ड करके वो सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है इन ओन सेल्फ, दिस डजंट मीन सेल्फिश हो जाता है, वो नहीं है। इसका मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग दे, मतलब सारी इच्छाओं को, डिजायर्स को छोड़ दे और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, इसका मत तो वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है, स्थिर बुद्धि, या दैट पर्सन इज नोन एज स्टेबल इन विजडम। ये सेल्फ सेटिस्फाइड या आत्मा से आत्मा में स्थित होना क्या है? ये डीप मेडिटेशन से आता है, और जब आप मेडिटेट करते हो तो यहाँ पे आपको आत्मा का रियलाइजेशन होता है, ये वही है। देन नेक्स्ट 56 श्लोक में हम आते हैं, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन स्टेबल इन विजडम किसके लिए? अब सेजेस के लिए बता, मनीषी के लिए, मुनि के लिए बता रहे हैं, उनके लिए स्टेबिलिटी, सबके लिए अलग अलग बताया। तो उनके लिए he whose mind remains undisturbed in sorrow and who does not crave for pleasure, जिसको ना तो कोई दुखी होने पे कोई वो दुखी हो रहा है, भाई कॉमन मैन है, हम तो होंगे ही, उनको पता है। लेकिन एक मुनि के लिए स्थिर बुद्धि क्या होगी कि वो कोई दुख में परेशान ना हो, सुख में भी कोई ज्यादा उसको प्लेजर होने की, खुश होने की जरूरत नहीं है, और इसी तरीके से भय क्रोध उसके जिसके नष्ट हो गए हों, मीन्स एंड हु इज फ्री फ्रॉम पैशन, फेयर, एंगर, इस सब क्वालिटी से जो फ्री है, काफी ज्यादा स्टेबल है, दैट इज द सेज विद स्टेबल विजडम। अब हम आगे और चलते हैं। आगे हमारे पास 2 और श्लोक हैं इसी के कंटिन्यूशन में, और यहाँ पे और क्योंकि अर्जुन ने 54 वाले श्लोक में, इससे पहले वाला भगवान कृष्ण से पूछा है कि कैसे होता है एक स्थित प्रज्ञ जो भी इंसान है, स्टेबल इन विजडम की क्वालिटीज क्या होती है, कैसे उठता बोलता है। तब भगवान पहले एक मैन के लिए बता रहे हैं, फिर एक सेज के लिए बता रहे हैं, और फिर इसके को आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट ही हु रिमेन्स अनअटैच्ड अंडर ऑल कंडीशंस, किसी भी चीज से अटैचमेंट, he who is neither delighted at good nor dejected with evil,
हम लोगों को कहा जाता है ना कि नॉन जजमेंटल बनो। हमको तो जज करने की आदत है, गुड बैड राइट रॉन्ग उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन ये श्लोक हमें मदद करता है इस चीज के लिए कि किस तरीके से हमें नॉन जजमेंटल रहना है। और एक और इसमें हाँ फायदा जो दिखता है कि ठीक है अप्रिशिएट हो सक्सेस हो तो ठीक है, लेकिन जब हमको डिजेक्शन मिलता है या हमारे साथ बुरा होता है तो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वहां पे भी ये श्लोक हमें मदद करेगा, स्टेबल इन विस्डम। ये इसको हिंदी में एक बार अगर हम पढ़ ले तो जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित मतलब अटैचमेंट आसक्ति रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को जो आपको चाहिए वो चीज मिली या नहीं मिली, उसे उसको मिलकर के ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, मतलब ना इसको अच्छा लग रहा है ना ही बुरा लग रहा है, उसकी बुद्धि स्थिर है, सब इवन है, कॉमन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब इवन माइंडेडनेस। अब मैं एक और लास्ट श्लोक पे जा रही हूँ। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को एग्जाम्पल देके बता रहे, जस्ट लाइक अ टॉर्टोइस, वन लाइक अ टॉर्टोइस withdrawing its limbs from all sides, ये अपनी सारी साइड्स से लिम्स को अपने अंदर कर लेता है। ये ऐसे ही हमको हमारे सेंसेस ऑब्जेक्ट्स को अंदर कर लेना है। He detaches completely his senses from the sense objects. His wisdom is stable. Okay? एक बार इसको और हिंदी में हम देख लेते हैं। जैसे कि कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही जो पुरुष जो मनुष्य है इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है, तब उसकी स्थिर बुद्धि होती है। मतलब उसका किसी भी सेंसरी प्लेजर्स और इनमें कोई अभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी विजडम स्टेबल। सो ये एक अच्छा एग्जाम्पल भी भगवान ने टॉर्टोइस का दिया है। और बस इतना ही मुझे अभी करना है, आगे मैम कंटिन्यू करेंगे। Okay, thank you, Shakuntala. And now Welcome. you with the rest of the shlokas from this chapter. Okay, give me a second. I need to. So welcome. Okay. So Shakuntala ji just spoke about the tortoise, and I'm going to show you a small little video to illustrate the example that she spoke. So, is the video moving? Ma'am, there's a lag between the audio and the video. Seems to be some lag. Hold on. Okay, I think I'll stop share and share again. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Then it'll be easier. So just give me a second. Now let's see if it moves. Not moving, I think. What should I do? Maybe I should close the thing and start again.
Ma'am, do you have the video separately stored somewhere in your laptop? I don't Something is know. embedded in the PPT. तो कई No, बारी it तो- moves. It moves. I think I just have to. अभी तो चल रहा था, हाँ अभी हाँ चल रहा है। We just, चला के दिखाया था बस ओके। Just hold on. I'll just make it, तब तक राहुल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी राहुल जी क्या क्वेश्चन है ये? बिकॉज पुण्य कैन नॉट बी सीन इन द एब्सेंस ऑफ पाप, टू साइड्स ऑफ अ coin. Take later. Okay. Now let's see. So what exactly happened was that the wild animal, the lion, approaches the tortoise, tries to, he obviously wants to eat it, but he's not able to eat it because the tortoise has withdrawn all his limbs and he's become so static. He's moved into a state where he's actually become like a stone. And the lion is trying all possible ways, and that's exactly what happens to us in this world. Sense pleasures attract us, they come towards us, they are introduced to us, they tempt us. But the Lord says that be like this tortoise, withdraw yourself so much into yourself, within yourself, that nothing can actually affect you. And all these temptations are actually temporary. The lion that went to the tortoise, but it is temporary. This danger is temporary. If you understand that these temptations are temporary, they will go away after some time, then you can be like this tortoise, you can get into your shell, and also at a point when these dangers go away, you can again start moving in your life. So I want you to take about two minutes and just think of the temptations in your life. Take some time and think of the temptations in your life, which could be as simple as sitting and getting into a daydream state. That is also a temptation, by the way. Okay? Krishna says that these desires that are also objectless are also desires. कि मैं आराम करूंगा, मैं काम बाद में करूंगा. You know, I just want to rest today and take some time away from things. That is also a desire that you are going to entertain. And sometimes people get caught into that desire. Kal kaam karunga, postponement. Sometimes we just sit and we kind of daydream, building castles in the air. That's also a temptation that we get into. So take some time and just think of the temptations that you feel you give into, and you know, you feel that this will continue, and maybe you continue to experience this temptation for a longer period of time than required. So if you want, you can put it up in the chat, the kind of temptations that you feel you are going through, which you're not able to give up. And शकुंतला जी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है, पाप और पुण्य दोनों को एग्जॉस्ट करना है. Pleasant and unpleasant. We get attracted to the pleasant and we have aversion for the unpleasant. This aversion of the unpleasant is also something which is called an attachment. Even that is temptation. I don't want to talk to this person. I don't want to meet this person. That also comes into desires. So I want you to just think of whether you are able to withdraw and stay withdrawn, stay within, allowing the dangers to pass, allowing the temptations to pass. Are we able to do that? Nanvi says, I find it hard to let go of midnight peace. Right, absolutely. So you are aware that it's hard to
have binges during midnight. People want to eat comfort food in the midnight, right? That's a comfort. You're getting attached to that. That's danger. That's temptation. Anyone else would like to share about what are your temptations? Whether you're able to stay, Shakuntala ne kaha hai, in the equanimous mind. Allow that mind to be stable. Allow the temptation to ride over. And then maybe you can walk again like the tortoise. Things that possibly we need to understand. And this is extended to verse 64, which speaks about self-control. So the tortoise is living a perfect life. He's steady in wisdom. Shakuntala ji ka jo slide that she showed, 57, 58, about steadiness in wisdom. And you are prepared for danger. You know, in this world, moment you get up in the morning, you have to be prepared for danger. So that when the tortoise moves out, he's prepared for danger. He's sensing the danger. So are we able to sense danger when you go to a party? Can you sense, okay, I'm entering dangerous terrain, and maybe I'm going to be offered something which is going to intoxicate me? Do I have the self-control not to give in, right? So as we get up in the morning, we need to prepare ourselves for the temptations that this world has to offer us. And I think it's very beautiful in this verse because it tells you that if you get prepared, then self-control will start coming to you. You can move into this world of sense objects, with neither any special love nor any particular aversion for it. Somebody is drinking, I'm okay with that, right? But that doesn't mean that I need to give in to temptation. So do you think this makes sense to you about being prepared for danger? Do you think we can start preparing ourselves every morning when we wake up? Like suppose you have a plan, to go shopping today, and you know that's dangerous. You're going to give in to your desires. Can you prepare yourself before going for shopping for not giving in to these dangerous temptations? You have 200 rupees or 1,000 rupees in your wallet. That's exactly what you are going to spend. Or you take 5,000 rupees in your wallet and decide to spend only 1,000. So what happens is you're going to be tempted to spend more because you have more in your wallet, right? And you then train your mind with, not giving in to the temptation, and slowly your self-control will start getting better and better. Do you think this is actually possible? You take more money and you decide to have a cap of spending. Has anybody tried this and would like to share? Anyone would like to share if they've ever tried this? All right, seems like nobody seems to have tried this. But do you think this is a good way to try to move away from temptation? Anybody? Anybody would like to share a good way? A simple thing that I have done of late for a couple of years now is I ask myself a question: is this a want or is this a need? Okay. Is this a want or is this a need? And the moment it says it's a want and not a need, then I step away. And Very to a good. large extent, this has helped. Very good. So asking questions to yourself when you go shopping or when you go anywhere for that matter, where there is these dangers going to be staring at you, it's a good idea to prepare yourself for them. Okay? Yes, Now, ma'am. इसमें I can give my example also. मेरा temptation के लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता है. ऑनलाइन ही मेरे को सारी बुक्स मिल जाएंगी जो मुझे परचेज करनी पड़ती है.
बट रिसेंटली व्हाट हैपेंड, मैंने देखा कि इतना बुक्स मैं खरीद चुकी हूँ कि मुझे उसको पढ़ने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। देन आई हैव अब मेरा टेम्पटेशन उधर कम हो गया है कि नहीं, चलो अब नहीं लेना। Right. So you are asking yourself question as to, if I keep buying books, do I have the time to read it all? Whatever books I have bought, let me finish that and then let me buy new books. So this kind of inquiry, we spoke about this in the last talk that we had about self-inquiry. This is what Krishna wants Arjuna to do. Inquire. Don't just give in to, I don't want to do this. Instead, inquire that we need to actually behave in a manner that is fit for a warrior in a battleground. The other interesting example that is there in this verse is of a shadow. You know, the shadow follows us wherever we go, but it stays uninvolved with the sense object. Your shadow cannot get entangled with love or hatred. So a man who takes a whip, this is example that is given, a man who takes a whip in his hand has to learn not to use it. This is the way to save himself from the sorrows of the world. So it's very important to understand that you may have many things with you, objects of pleasure. You live in a beautiful home and you want to decorate this home, change curtains every 6 months, change the upholstery, every year. Why? Because you like something else. The sofa is absolutely fine. The upholstery is absolutely good. The clothes that we buy, we already have a cupboard filled with clothes, but we keep buying more and more. We give in to temptation, and eventually this leads us to sorrow. Okay, so eventually desires lead us to sorrow. So it is important to understand that like the shadow stays unaffected, our own shadow stays unaffected by the sense object, does not get attached or does not create any aversion from them, then it is better. That is the way to remain equanimous in your mind. Just think of yourself like a shadow, that you're going shopping, that you're just like a shadow. You're just going to watch everything today without getting involved. And I think slowly that can become a habit. So the mind is to be trained in two aspects, is what the Lord says. One, live in self-control. And second, move along the sense objects with neither an attachment nor an aversion to them. The disturbances and agitations in the mind caused by the sense enchantment, is what Krishna says, are immediately brought under control. Now, this obviously indicates to us that we need to have a pure mind, right? Only a person with a pure mind, that's why it's about purity of mind. A person with a pure mind will possibly get least disturbed. Now, how do we know that we have a pure mind? So I want you to do an exercise. Close your eyes, everybody. Close your eyes. Just focus on your breathing. And I want you to think of God, whichever God you want to think of. Think of God. You can think of the image of God. You can think of the specific temple in which there is idol of God or anything. Just think of God. Now, when the first
thought apart from God enters your mind, this is the sign of impurity. When the first thought apart from God enters your mind, Krishna says, this is the sign of impurity. Because Arjuna asks, how will I know I have a pure mind? So okay, any feedback? After how many seconds, or after how many more seconds did a thought apart from God enter? 10 seconds. 10 seconds, Shakuntala. Yeah. Anybody else? It felt like immediate. Yeah. Right. So, because everybody speaks about Shuddhikaran, right? Have a pure mind, purity of thought. How do we assess that? How do we know that our thoughts are slowly pure? So this is a good exercise that you can do on a regular basis. Try and do this exercise at any time of the day, especially when you're disturbed. You know, when you are not calm, when your mind is kind of tumultuous, or it's disturbed, agitated, just do this exercise. Sit and think of God. Ma, can I ask question? Yes? You told me to think of God. I am thinking of Sai Baba, but my mind got distracts, thinks other things, negative things. Right. So that's exactly, see, Lakshmi, that is what is being said. That we have so much of thoughts which are distracting us, which are disturbing us. This is how the mind becomes impure. These are the various impurities, which are also called vasanas in our mind. And simple exercise you can keep doing every time you allow the image of God to come in your mind. And watch, as you keep doing this exercise, slowly and steadily, maybe the impure thoughts will become lesser, it will reduce in intensity, the time that the impure thought takes over your mind will become less, and your mind will become more and more equanimous. Because we are talking about keeping balance, or Shakuntala Jinaka's Prajna. But how do you do it? Right? One is kind of meditation, japamala, but still you're introducing, you are forcing, especially when you do the mala, your mind may not be with the chant for 108 beads. It may be going here and there. So become aware how these impurities are actually creating problems in your life. Second, what kind of impurities seem to be overpowering you? There could be 1 or 2 or 3 impurities or impure thoughts or vasanas or desires or attachments that repeatedly come in your mind, right? Like when now you're older, so you won't be having those kind of vasanas which a child will have, right? The chocolate cream, the ice cream, that will not be there. There'll be different kinds of attachments that you've got into, correct? So if you just go back in time and look at the way your mind has got these layers and layers of coverings. Okay, what Krishna says is in granulation. Our mind is getting granulated. It's got these layers and layers of attachments. So if you can just sit for the next maybe couple of weeks and just have an idea about the kind of layers or the kind of coverings that your mind has got, you will be able to slowly understand that from where they have come and what you need to start working on. So slowly you will start understanding that slowly, by little by little, these coverings are becoming lesser, because whenever you think of God, there's this same thing that seems to be coming. And when you become aware of it, when you become aware or give it attention, the vasana will start changing, because it's now being observed by you. They say that what you observe changes its nature. What you attend to
changes, right? So start working like this, and you will realize that gently the image of God will stay longer in your mind, and the impurities will slowly start to reduce. Okay? So a pure mind is one which feels in itself the least sense disturbance. That's the pure mind. Okay? So one who has trained himself to live among sense objects is a spirit of least, with a spirit of least attachment or aversion of them. This is called prasada. This is what Krishna says in this verse, which is 64. Okay, so let us understand this so that we can start working on the subtlest things in our mind and bring it forward. Don't push it behind. We have a habit to suppress things. There's no need to suppress. Allow it to come forward. Allow it to be seen. Allow it to be observed for it to change. Otherwise, you will never be able to have a pure mind. Okay? So it's important to do that. Now, let us move to the next slide, which 65 to 68 verses speak about Buddhi Yoga. I'm going to ask you some questions, and I'd like you to respond to those questions. What is the reason that we should maintain tranquility of the mind? Give me your answer. Anybody can speak or put it on the chat. What is the reason for that we should maintain tranquility of the mind or equanimity of the mind? What do you think is the main reason that Krishna speaks about? To get the better results. Get better results. What else? Come on, everybody. To get better results. Why else should we maintain tranquility in the mind? To remain balanced. To remain balanced. Very good. What else? For mental happiness. For mental happiness. Excellent. What else? Come on. To make I'm sorry. Yeah. To take proper decisions. To take proper decisions, a calm mind. This is what was said in the verses 50, 54, 57. What else? Why else? So eventually all this that you all said is correct. And if we do all this, what happens is all sorrows will be destroyed. Correct? For detached attachment. Correct. So slowly, if we keep doing this, all our sorrows will be destroyed in tranquility. How does one destroy sorrows? Anybody? How? Because we have to go step by step, right? So, okay, I know that if I'm tranquil, all sorrows will be destroyed. So, how does one destroy all these sorrows? What does one do? To accept the situation. Accept situation. What else? Come on. It transfer into acceptance and realization and listen. Okay, acceptance, realization, all this will destroy sorrows. Correct. What else? I think by braving it, by facing the whole thing. By facing. Yes, facing it and then analyzing it's a temporary phase. After all, it's going to have ups and downs are always there. Correct. Correct. Like what Shakuntala ji said, during joy time, when the joyous time is there, not to be super excited. Very good. So when the destruction of sorrow is connected to the elimination of vasanas or desires. When slowly all desires get eliminated, our sorrow will be destroyed, right? How does one eliminate the vasana? कैसे हम इस vasanas को eliminate करेंगे? So, Shakuntala ji has already said all these things, but I'm just asking you all to recap it so that you understand it step by step. How does one eliminate all the vasanas? Need analysis. By analysis, very good. By knowing that they're temporary, right? Third, by not going, by not getting attracted with something that is pleasant and not having
aversion for what is not. So by And keeping ma'am, the not mind, comparing oneself with other. correct, absolutely, by keeping the mind exposed to an intelligent life of self-control. Remember the tortoise, right? Don't forget the video of the tortoise, okay? Every time the danger is looming large, just remember the tortoise. That is why I use the video like a anchor in your mind, okay? So by intelligent life of self-control, we can eliminate the vasanas. What is the yoga of intelligent living? Krishna says, Buddhi Yoga. That's really what verse 65 to 68 is what he speaks about. What should be our goal? हमारा goal क्या होना चाहिए? कृष्ण जो कह रहे हैं, भगवद गीता में जो लिखा हुआ है, what is our goal? Realize. पढ़ने के बाद realization. The goal is devotion to self-knowledge. हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, हमें सेल्फ नॉलेज लेना है जो मेरे लिए मेरे माइंड को प्योरीफाई करे, राइट? नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरी भगवद गीता में जो लिखा गया है वो ज्ञान है, इट्स नॉलेज. देयर इज कर्म योग, भक्ति योग, बट नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है. And a lot of our saints and great masters have also emphasized knowledge. Can you name any master who has emphasized knowledge more than anything else? Any master that you've read who has emphasized knowledge? Jnana Yoga. Vivekananda, he's emphasized Jnana Yoga. He always spoke about knowledge, self-knowledge. So when you start devoting yourself to your own knowledge, what is coming up in my mind? My mind is like a laboratory. It is trying to teach me everything. It's trying to teach me how to purify it also, right? So this devotion to self-knowledge should be our goal. Because once we have that, the rest of it will follow on its own. Should we be blind to sense organs? Now, हमारे पास sense organs है. We have eyes, we have ears, we can see, we can hear, we can smell, we can taste. Should we be blind to all that? Then should we become blind? No, क्या no, हमें no. उनका उपयोग ही नहीं करना चाहिए? नहीं, blind नहीं होना. Correct? But we should not be puppet of them. Desires. Right. Sensibility नहीं होनी चाहिए. Right? You should utilize. After all, we are gaining knowledge by reading, right? Yes. Isn't it? We are using our senses. But what am I listening to? Am I listening to some nice, beautiful bhajan? Or am I listening to some nonsensical things on television? So sense debility, this is what Krishna speaks about in these verses. Sense debility is not a sign of a perfect man. Eventually, हमें perfect बनना है. The perfect one transcends the vasanas through the use of Buddhi Yoga. Okay, so this is very important. Our goal is what somebody just said: analysis, self-evaluation of life, not self-evaluation of us, self-evaluation of life. जिंदगी है क्या? You observe with a clear discrimination. You analyze it with clear discrimination, right? And this way, slowly and steadily, the required amount of devotion to self-knowledge will start coming. पहले इतना आपका है devotion, धीरे-धीरे वो बढ़ता जाएगा. When you realize that actually you are much more at peace, though you have not shocked anything. When you come at that moment, observe your senses. You're feeling jealous, envious, upset, angry. Why did I tell myself today only that I'm not going to spend money? I'll do this tomorrow. Don't postpone, right? Observe these emotions coming up, these attachments that are coming up. By the end, when you get into your car and drive back home, within 1 hour, even less than that for that matter, your mind will move away from those attachments, those dangers, and it will be at peace. Have you ever experienced something like this? You know, where there is a lot of temptation, a lot of disturbance happening in your mind, but after some time, you wonder, was I really feeling like that? Has it ever happened?
suddenly you start wondering, I was actually feeling like that? No, not at all. I don't think I was feeling like that. Do you ever say that to yourself, or a thought like that comes to you? होता है ऐसे? मेरे साथ होता है हाँ, है ना? जैसे कि मैं अगर कुछ खाने की बहुत इच्छा हो रही है, फिर मैं सोचती हूँ शायद मुझे भूख लग रहा है, अगर मैं खाना खा लूंगी तो वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी, then actually it goes away. Or if I want to buy something, then I feel कि बहुत है, पहले वो यूज कर लेती हूँ, अगर एक हफ्ते के बाद भी मुझे ये फीलिंग हुई कि लेना है तो ले लूंगी, फिर भूल जाती हूँ. Very good. भूल जाती हूँ. See, the mind has been given this wonderful mechanism of forgetting, isn't it? मन जो है वो अटैच भी होता है, but मन के अंदर एक और kind of, there is also a mechanism in the mind which actually gets you to forget it also. If I have to ask you, maybe last year, during 2020, did you ever miss something that badly that now that things have opened up, you have gone and bought it? ऐसा हुआ है किसी के साथ? There were so many people, who used to say that, ma'am, abhi to spas band hai, but I want to get my nails done. Moment the thing opened, I'm going to go and get my nails done, or go and get a massage done, right? So you waited that whole year, and moment sab cheez khul gayi, there you were at the parlor. Did it happen like that with anybody else? Definitely threading for threading. Right. So, what I'm trying to get at is there are some desires that stay. The year may pass by, but moment things get better, we may have run there quickly and either bought it or done something about it. Okay. So Buddhi Yoga, Krishna emphasizes a lot on Buddhi Yoga in these particular verses. Okay. Now, the next thing I want you to see, this picture. Just look at this picture, and Krishna speaks about contrasting viewpoints. Each person comes with their own viewpoint. So let us say if there is a person who's come from the village to a city like Mumbai, and he is taken out in the night in a tonga to see the lights of this city. What is he going to see? What is going to be his viewpoint? Let's say a person from the village comes to Mumbai city, maybe a electrical engineer is going in Mumbai city in the night and there are lights everywhere. How would he view it? Or a stage designer is also viewing the lights of the city. How will each one of them view it? Villager kaise dekhega? When he goes back to his village, what is he going to tell his friends there about the nightlife of Mumbai? Nightlife, like a lot of lights. They'll say that they never sleep. Yeah. बहुत ऊंची buildings थी. Yes. Correct. High rises. Maybe he will wonder कि ऊंची बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे लोग पहुंचते कैसे हैं? Correct. Because he hasn't gone inside the building, right? He is just being taken on the road to see the lights. He may wonder कि ऊंची बिल्डिंग में लोग कैसे पहुंचते हैं? Or he may actually not know that there is something called a bulb, because he's never seen a bulb in a small little village, right? He may possibly go and tell them, I don't know how ये लोग दिया जलाते हैं, इतने सारे दिए जलते हैं. He may not know the word bulb. He may not know kind of electricity, correct? So, and what about a stage designer? What would he look at the city as? What would he be having a viewpoint
of this city at night with We- light? Waste of energy, lot of lights. Okay. Environmentalists would possibly say that, why are these lights being wasted? Why are we wasting so much of electricity? Right? Electrical engineer will possibly give us a lecture on how these lights are, whether there is a particular kind of current that is moving in these lights, there's DC current, AC current, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है. That's the kind of power station from where the electricity comes. He will give us some gyan like that, right? So 3 phase aa rahe hain, 1 phase aa raha hai. Correct. So each person is looking at things differently. So the verse 69 speaks about contrasting viewpoints. Okay. So in order for Arjuna to get the idea that the world is experienced by an individual through his body, mind, and intellect complex, Krishna contrasts 2 points of view. He speaks about a view where there is avidya. The villager is perceiving this city of light through his mind, which is ignorant. And the wise will possibly perceive the same image differently. Okay? So how does somebody perceive work? Let us say this world. So everybody perceives it differently. How do you think a person who is ignorant, who doesn't have much information, some knowledge, how will he perceive this world? He may just go along with it. Right? Basic. Basic. Khana, pina, sona, that's it. Correct. Khana, pina, sona, and that's it. Procreation. मुझे 2 बच्चे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. Why? It is giving me a lot of pleasure. या फिर किसी के 3, 4, 5 बच्चे हैं तो मेरे तो 6 या 7 होने चाहिए. Competition can be there even having children. Okay? So the key is a person who is ignorant will perceive this world of sense objects in a different way. He will be seeking pleasure. And he will do everything in his power to get a big home, get many cars, have as much of ornaments, fill his cupboard with clothes, because he thinks that all the money that I have, I must spend it before I die. He won't think of charity. He will think of himself, a self-centeredness. But a wise person, how will a wise person perceive this world? He will perceive this world actually as being dangerous, actually as being a world that can give him sorrow. Right? So we have to understand these contrasting viewpoints in the world. Nothing is bad and good. It's just at different viewpoints. And Krishna is getting Arjuna to understand these different viewpoints, because he wants Arjuna to decide for himself what is right in the battlefield. If he's in the battlefield, then he will have to act like a warrior. Instead of seeing his the people out there as his family members, he needs to see them as Shatru, as people that he needs to kill, not because he wants to kill them or they are bad people, but because he has to do it because of what is right. Kshatriya dharma. For his dharma, correct. So his Kshatriya. dharma that he needs to act. And that is why in the verse 69, Krishna speaks about contrasting views. 70, 71, and 72, which is the last 3 verses of chapter 2, is about sannyas yoga. Now, Arjuna asks 4 questions to Lord Krishna. He wants to know what is the nature of a person who is enlightened. Because Krishna is talking about sannyas. So he says, what is the nature of a person who is enlightened in samadhi? What does he experience? How does he walk? How does he talk? How does he interact with the world? Arjuna is asking. Anybody can give me answers? How do you think
enlightened, the nature of an enlightened person is. How does he walk, talk, how does he interact with the world? He is in a blissful state. In a blissful state. What else? Go on, come on. How will he interact? How will he interact with the world? Will he have a special way of actually interacting, a special way of eating, a special way of talking? And then we know, oh, this person is enlightened because he is doing this. He's walking like this. He's talking like this. Is there something like that? No, he will have a balanced life where he will have no craving and will have a balance in his life. I feel he lives a life of mindfulness. Okay, okay, good. What else? So, will he have a special way of eating, walking, talking, interacting? He won't have any craving. But how will I recognize that this person is, will he have some a special way of functioning and I will know, oh, this person is, because he's not having craving, I can't see that, right? Whether he has craving or he does not have craving. It's not written on his head, I have no craving or something like that. So Arjuna is asking, how will I know that this person is enlightened? And so Krishna says that there is no special way that this person is going to behave or walk or talk or interact with others. But he is definitely going to be, like you all said, in a mindful state. What is said here is that instead of saying what, he will say so what. What is making me angry? He won't ask that. He will say, so what if this is making me angry? Right? So when you understand what and so what, the distinction, suppose if I say, what are you doing? This is making me angry. And if I say, so what if you're doing this? If I say, so what, just say the word, so what, and see what happens to you. Say the word what and say the word so what. And is there a change in your mental texture, your mind texture? See what is happening when you say the try and make a distinction. आपका reaction different हो जाता है एकदम altogether. Don't feel like reacting in a very strong manner. When you say so what? To that particular state or anything. So what? Take it lightly. Very good, Imagine. Can you see just a word? What to so what? And you can see that your reaction changes. Right? Suppose you're going anywhere to a party and somebody doesn't give you attention. You crave for attention. There's a craving of desire for attention. And somebody is not giving you attention. And you say, so what? So what if that person didn't give me attention? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? So Even-mindedness. Yeah. So what if somebody criticized me? No big deal. Right? Or so what if somebody didn't like the food that I prepared? It's okay. क्या फर्क पड़ता है? So the key is, so what? It's a very good thing to get this into practice. Because once you get that, you will yourself realize that you are able to ward off temptations very easily, aversions very easily. It does not matter to you. That doesn't mean you're insensitive. Please understand this. Krishna is not asking Arjuna to be insensitive, that a person who is enlightened is insensitive. No. He is making light of it. He knows that this is going to lead me to sorrow and I don't want it. So I say, so what? So what if somebody didn't touch my feet? It does not matter to him, right?
And that is how an enlightened, the nature of an enlightened person is. He's in the world, but he's not of the world, right? And the verse also speaks about as the waters from different rivers pours into the ocean, the water remains, the ocean remains undisturbed, the waters remain undisturbed. ऊपर, ocean के ऊपर, there is so much of हलचल, है ना? पर नीचे अगर आप डाइव करते हैं, तो क्या होता है नीचे? Calmness. That's why the life in the ocean, when you go dive in, what happens? When you swim into the ocean, all the fishes are swimming quite calmly, peacefully. They're not kind of banging into each other, right? The ocean waters don't create that kind of feeling for the fishes right within, that they bang into each other or they feel upset. Not like that. And this is the nature of an enlightened person, right? So whenever you have these emotions that are causing you a lot of disturbance, just know that deep down within you, there is calmness. Allow this thing to pass, right? This too shall pass. Allow that event to pass. Allow that disturbance to pass. Allow that agitation to go. Allow that person to move away from your vision. Because you know that deep down, like the ocean, you are calm. These things have to be done. Okay? Krishna is giving Arjuna a lot of self-knowledge. And as the chapters proceed, Arjuna gets it. So we are still in chapter 2, and as we know, chapter 2 is the essence of the Bhagavad Gita. Everything in the 18 chapters, everything, if you read chapter 2, you know exactly what the Gita is all about. Okay? So everybody's understanding the so what principle, right? Everybody's getting the so what principle. Yes, I'm going to practice it quite a bit. Lovely, very nice. Now, the one thing is that to become enlightened, what is it that we have to have? Can somebody tell me, अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए? What should I have? What should I actually cultivate? What should I cultivate within me? Do good. Get moksha prapti. Do good work. Help others. Yeah, do good work. All that is karma yoga. We'll all keep doing that. But मेरे अंदर कुछ है जो मुझे cultivate करना पड़ेगा. Krishna says you have to have vyakulta. What is actually vyakulta? Spiritual motivation. I have to have divine restlessness. I have to be restless, but divine restlessness. I have to think one more day has gone by and this thought, and I have not seen God. One more day has gone by and I have not had the vision of God. This is divine restlessness, Krishna says. How beautiful, isn't it? एक और दिन चला गया और मैंने ईश्वर का दर्शन नहीं किया. ये व्याकुलता मेरे अंदर जब होती है, I create divine restlessness. Spiritually, I'm motivated, right? One more day, one more day, one more day. कितने दिन और बीतेंगे और मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे? कब होंगे मुझे ईश्वर के दर्शन? Right? अगर मैं ये सुबह उठते ही, रात को सोते ही मेरे मन में ये विचार हो, तो you will seek that and everything else will fall away. और सभी चीजें कोई मायने नहीं रखेंगी, right? जब ये तो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए, right? और कोई चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा. I'm there in the world, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, पर कहीं ना कहीं वो जो व्याकुलता है मेरे भीतर, स्पिरिचुअली जो मैं मोटिवेटेड फील हूँ, जो ईश्वर के दर्शन चाहिए, बस उसकी प्राप्ति मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मेरे मन से वो अटैचमेंट ऑटोमेटिकली गिर जाएगा. Am I right? Will this not happen to all of us? If we just have this question in our mind?
अभी तो ये सोचते हैं कि मेडिटेशन ही नहीं किया करना था, आज किया ही नहीं, एक दिन फिर निकल गया। Ma'am, this divine restlessness, it comes, doesn't this come automatically? I mean, can it be cultivated? I mean, Yes, you cultivate it. You keep asking this question to yourself every day. One more day has gone by and I haven't had the vision of God. One more day has gone by. So what will happen, Rahul? My mind will be focused on that, right? Mhm. Because I am feeling restless about seeing God, about experiencing this. Slowly what will happen? All the wants will go away. Other wants. I will not be thinking of, when am I going? I will not become restless about when will I buy a new car. It's not important. I'll buy it for the sake of my family, but I won't be attached to it because I'm sitting in a beautiful car, so many lakhs of rupees. But मेरा ध्यान उस पे नहीं है, मेरी attachment उस पे नहीं है. अगर किसी ने आके ठोक भी दिया उस गाड़ी को, I won't be upset. That's not what I am seeking. Correct? Yeah, ma'am, like one knows that, like there is that void, and that void cannot be filled, but ultimately, that will only be filled when you, I mean, it's Bhagwan ki darshan. Right. Wonderful. But Yes. I mean, it's a very deep thing, but to long, I mean, it's a very deep kind of a longing. Yeah. Yes, Rahul. It's the deepest kind of longing. है ना? It's the only longing that is going to take us on the other side. So it will happen. It happens. As you start thinking about it, first तुम्हें सोचना है इसके बारे में, correct? Because you spoke about void. We all have that void, emptiness. हर व्यक्ति के भीतर कोई खालीपन होता ही है. हम उसको भरते रहते हैं अलग अलग चीजों से, राइट? फिर भी वो खालीपन रहता है थोड़ा सा. अगर हम इस तरह से सोचने लगे आज से, तो धीरे धीरे क्या होगा? Maybe you won't achieve moksha in this lifetime, but definitely you'll be getting closer to it, right? Because all these things will get shed. All these wants will go away. I'm not talking about you becoming depressed, okay, Rahul? I'm talking about somebody who knows that that's my goal. I have set that as a goal. And to reach that goal, I am working on it. At the same time, I'm living in this world, I'm eating, I'm enjoying good food. So I'm not attached to that. मुझे मुझे thirst नहीं है. That thirst will go away. Right? प्यास नहीं रहेगी, तृष्णा रहेगी. The difference between प्यास and तृष्णा. Right? प्यास मेरी बुझ जाएगी. एक गिलास पानी के लिए I'm happy. Because मेरी नीड पानी के एक ही गिलास है, या अगर कोक है सपोज, तो मेरी प्यास कितनी है? एक गिलास कोक की, पर मैं पी रहा हूँ 3. So that will slowly go down. I will just maintain my body healthy. Right? So I will maintain my lifestyle. I'll maintain everything. But my goal is not to maintain my life. My goal is something else. When you have this higher goal, spiritual goal, you are automatically motivated. अपने आप को motivation आएगा आपके भीतर. Right? Okay, think about it. Yeah. Think about it and think deeply about it. And then maybe, things will start. Because suffering will disappear. जो worldly suffering है, that will not be there, right? Okay. And having the vision of God, it's not, oh, I'm suffering every day, I haven't seen the vision of God. It won't be like that. There'll be this feeling in you, that wow, at least I found this goal in my life. That's what I want. Okay. That is how really Krishna says, this is also one way of overcoming your wants and allowing you to understand what is true seeking, not pleasure, okay? What is true seeking? Everything, like as the waters from the distant rivers
So you're exposed to so many beautiful things in this world, and you're enjoying it also. But you are undisturbed by it. आज है कल नहीं, कल नहीं आज है. It's okay, doesn't matter. So that's really what Krishna is saying. Deep down within you, you are moving towards sannyasa. Right? Now let's look at just the last two slides. What is real peace? That man attains peace who, abandoning all desires, moves about without longing, without the sense of I-ness or mine-ness. Right? So when you start speaking in the right way, all this will go away. The longing will move out of the I-ness. Ye mera hai, ye mera hona chahiye. I am somebody. I need this. It's I-ness and mine-ness. जब ये चला जाता है, then you attain peace. And this is what renunciation is all about. Very beautifully, he has said that renunciation is not a state of dull, meaningless emptiness. No. The knowledge of selfhood, Brahmasthiti, is not dull. Oh, life is meaningless. You know, there's emptiness. No, how can there be emptiness when I still haven't seen the vision of the Lord? Okay, so depression does not exist actually. It's created by us. I'm depressed for many reasons, right? But why am I depressed? When my focus has to be towards seeking the vision of God, right? So this state can be experienced at any stage of one's life. You can experience the vision of God and moving over to that beautiful other side at any stage of your life. It's not that you have to take sannyasa, like become 80 and take sannyasa, or 70 and go to the forest and then you experience God. It's nothing like that. Right? At any age, if you have the right seeking, you can experience the vision of God. So let's look at the last slide. Hold on. जब हमें कोई छू लेता है, कहते हैं saints and sages have the power to make you experience this vision of the Lord. The touch of the philosopher's stone, verse 72, beautiful verse. And the Brahmasthiti, the state of God realization. He says, Krishna says, Arjuna, the son of Pratha, never having attained this and having established yourself in this state, the hour of death, in the hour of death, you can be liberated from Maya. And I want you to tell you the story of Salipati Ghosh. Who was he? Anybody? Rahul, have you read of Salipati Ghosh? Story of Salipati Ghosh. One of the disciples of Sri Ramakrishna was he? Absolutely right. Absolutely right, Rahul. So Ramakrishna, as we know, he was obviously somebody who was getting the vision of Kali, and he would go into this ecstasy, right? And Salipati Ghosh was a debauched person. He was a drunkard, and he had abused his wife for 12 years. And his friend one day told him that, come, I'll take you. You will experience what is actually ecstasy if you meet this amazing person. So Salipati Ghosh went along with his friend to Dakshineshwar, and he saw Ramakrishna, and he said, this man going to, how can he make me experience ecstasy? And it is said that he asked the master that, do you have some drink, wine, alcohol?
And that is how Ramakrishna, he understood that this man needs some help. And Salipada Ghosh continued to visit the master many times over. And then he realized that Ramakrishna has some power and he can make me see that vision that he is seeing. So one day what happened was, is a little story and I'm going to read it out to you. He went by boat from Calcutta to Dakshineshwar. And when the master saw Kalipada, he said that he had just been thinking of going to Calcutta. Kalipada told him that his boat was at the landing ghat and he would be glad to take him there. Sri Ramakrishna immediately got ready and left with other people and Ghosh. As they got into the boat, however, Kalipada had privately instructed the boatman to steer the boat to the middle of the river. Then he knelt down, clasped the master's feet, saying, "Sir, you are my savior. Please save my life." "Oh, no," said Sri Ramakrishna. "Chant the name of the Lord, you will get liberation." Kalipada said, "Sir, I'm a wicked man. I'm a drunkard. I do not even have time to chant the Lord's name. You are an ocean of mercy. Kindly save a ruffian such as I, who is devoid of discipline and righteousness." Meanwhile, as he held the master's feet, Ramakrishna could not find any way out of this predicament. So he asked Kalipada to stick out his tongue. Very interesting, my friends. Then he wrote a mantra on the tongue. The master said, "Henceforth, your tongue will automatically repeat this mantra." Kalipada was not happy with this. He said to the master, "I don't want this." "Then what do you want?" asked Sri Ramakrishna. "When I leave this world," replied Kalipada, "I shall see darkness all around, and that terrible darkness will fill me with horror. My wife, children, and other relatives won't be able to help me then. At that terrible time, you will only be my savior. You will have to take me, holding a light with your left hand and me in your right hand. I shall always be with you then. You will have to fulfill this prayer of mine." With heartfelt, full of compassion, the master said, all right, your prayer will be fulfilled." My goodness, you have brought me to the middle of the Ganges and have created such a scene. Sri Ramakrishna had promised thrice that he will do this to Kalipada Ghosh. And it is said in the story of this person that when he was passing away, which was many, many years later, okay, after Sri Ramakrishna had already passed away, when Ghosh was passing away, this is exactly what happened. He saw the master coming, holding his right hand, his left hand with the light, and he passed over. So what Krishna is saying here in this verse is that seek that goal of the vision of the Lord, and the Lord will be there in your darkest moment. So friends, chapter 2 ends with this, that only the Lord and his seeking can transform us completely, like this person was transformed completely. So don't worry if you have any bad habits, or if you're not able to give up on things. But if you start focusing on your seeking the vision of the Lord will definitely help you to move to a state where you will be able to transcend all attachments. So this is really what Krishna has told Arjuna. So chapter 2
actually is a very beautiful chapter because it ends with this very powerful knowledge of the self, and that what is actually seeking. Seeking है क्या? ध्यान करते हैं हम, chant करते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं. But I loved this, what he said was that every night and every morning when you wake up, say one more day has gone by without the image of the Lord. I mean, that's like powerful, very, very powerful. The thought itself gives me goosebumps that ऐसा भी कोई इंसान सोचे रोज. मुझे लगता है कि कालीपद घोष जैसे हमें भी हमारे डार्केस्ट sorrowful moments में ईश्वर के दर्शन definitely होंगे. So I love that also, that on his tongue, that now whenever you speak, you will speak something that the Lord wants you to say. These little exercises जो है ना, ये मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छी तरह से कर सकते और सोच सकते इसके बारे में. One thing like what and so what, I think that is a very beautiful thing to start working on, and also how to kind of purify your mind. Just think of God and see how many impure thoughts are coming. So कि अरे बाप रे अभी बहुत टाइम है, but keep doing it. Keep doing it, and you never know. You may actually have a day where your mind is not at all having any disturbing thoughts. तो इस तरह से मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए. चैप्टर 2 यही हमें सिखाता है. तो शकुंतला जी ने चैप्टर वर्सेस बोले, so you maintain the equanimity and how to do it, and I've given you some exercises, some tips how you can actually start working on buddhi yoga and of course sannyas yoga. This is how chapter ends. So that's our presentation, Shakuntala's and mine. So any reflections on what we have said? Your ideas, your thoughts? And I think it's going to be great now. I think from tomorrow I'll start, by tomorrow, from now onwards, I'm going to practice this so what, first thing. And morning I would like to do that exercise of having a vision, trying to hold on to the vision. Because that is most difficult. Even I want to try that. You tend to, हाँ जी, please बोलिए आप. Finish करिए जो आपको करना है. अच्छा, you tend to, or the to wave away from the place, आप visions आप सोच रहे हो कुछ भगवान के बारे में या ओम के बारे में या कुछ, and suddenly you drift away. But वो एक जरूर प्रैक्टिस करूंगी मैं. These two things I'm certainly going to do. और जैसे शकुंतला जी ने कहा कि थोड़ा सा आप बैलेंस होके अपना सोचते रहिए, तो that will be a great learning. Don't go to the left, don't go to the right. Right. Balance रखें. Tug of war. तो हम इस पूरे संसार में ना इसी गेम को एक्चुअली खेलते हैं. कभी कोई हमें यहाँ खींचता है, कभी कोई हमें वहां खींचता है, और हमें सेंटर्ड, बैलेंस, इक्वानिमस रहना पड़ता है. स्थिति प्रज्ञा इसी को कहते हैं, है ना? So these little things, you have to think about them, and work upon them. That's all. It's very interesting. Somebody there was a kind of some kind of experiment that was done where people were asked, how many of you would like to know how you will die? And the number of people who said yes were very few. Because people actually don't want to know the truth. Die vanity, so people don't want to know that. But when they were asked, would you like to know, when you are going to pass your exam? They said, yes, we would like to know that. So हमारी thinking इतनी limited है ना कि आज अभी मुझे क्या मिलेगा, एक साल में मुझे क्या मिलेगा, अरे मोक्ष कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा,
अब उसके बारे में क्या सोचना, right? So we all spiritual people talk about it, but they don't want it. They actually want very basic things in life, you know. तो ये हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है कि हम कहते जरूर है नो निर्वाण मोक्ष ये सब चीजों की लिबरेशन, वापस आना ही नहीं है संसार में, ये बोलने की बात एक है, पर अगर कोई आपको कहे कि अभी आपको मोक्ष में दे सकता हूँ, आपको छू के, आप कहिए नॉट नाउ, यू गिव मी आफ्टर 5 years, अभी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे तो अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है मेरा. Getting it? So it's very easy for us to say that we want it, but if I give it to you, you may not want it. So this is what we all have to understand. जब ईश्वर हमें कह रहा है कि हाथ यहाँ छू के आपको मोक्ष मिल सकता है, तो छोड़ो ना ये सब. Yes, that is called samsara, absolutely. ये संसार की जो माया है ना, इसने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है इतनी बुरी तरीके से कि the vision of God you can't see for more than a few seconds. Why? Because everything else that we have collected comes to us. उमा जी, हमारे मन में जो चीजें है ना, वही हमें जकड़ के रखती है. तो ईश्वर की जो पिक्चर है ना, वो एक्चुअली दूर चली जाती है, और जो दूसरी चीजें वो सामने आ जाती है. वो दृश्य तो है, वो तो हमारे साथ ही है, पर हम उन्हें ज्यादा देर तक क्लियरली देख नहीं पाते. दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज ये सब चीजें हमारे आंखों के सामने आ जाती है. सो दिस इज व्हाट आई थॉट वी शुड एंड द चैप्टर विद. ओशियन वाला एग्जांपल मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो आपने लास्ट के 3 श्लोक के लिए बोला कि अंदर से भीतर अगर हम डीप डाइव करेंगे तो हम शांति है. ये बड़ा सेटिस्फाइंग चीज है. ओके, ठीक है, ऊपर ऊपर है तो हम करेंगे तो हम नीचे पहुंच जाएंगे. ऑफ कोर्स पहुंच जाएंगे, है ना. दिस वाज गुड. Good. So, okay, so thank you everybody.